सो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है बिकॉज अगेन वन ऑफ द बुक्स विच टॉक्ड अबाउट दिस दैट पहले हम लोग स्कूल में कॉलेज में एमबीए के दौरान हमने बिहेवियरल फाइनेंस पढ़ा था विच टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इज नॉट एफिशिएंट ओके सॉरी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था विच ऑलवेज सेड दैट मार्केट इज एफिशिएंट सारी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर में डाले हुए हैं बट ओवर लास्ट 20-25 ईयर्स न्यू थॉट प्रोसेस इवॉल्व विच इज बिहेवियरल फाइनेंस विच सेट कि मार्केट में सारे इंफॉर्मेशन नहीं है मार्केट इरेशनल होता है और लोगों के बिहेवियरल बायसेस आ जाते हैं मार्केट के अंदर में which leads to price either staying high for a long period of time or the price staying low for a long period of time. That is where opportunity lies. तो इसीलिए हम बोलते हैं ना high can go higher, low can go lower because these are human biases which can considerable period of time lead to that kind of an exercise. Now, fundamental guy, I mean, I'm a chartered accountant, so I obviously love fundamental also, but somehow I have to justify a fundamental parameter with the price action in a stock and that's the magic. तो मोमेंटम क्यों आता है किसी स्टॉक के अंदर में और आप देखो अश्विन भाई का प्रेजेंटेशन में जब वो मार्क मिनेविनी का ऑडियो चल रहा था तो उन्होंने इनफैक्ट उसके पहले वाले में भी उन्होंने कहा कि अर्निंग ग्रोथ आप देखो जितने भी बड़े लोग होंगे ना वो ये वर्ड अर्निंग ग्रोथ को यूज करेंगे बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है फॉर एनी प्राइस एक्शन. सो दिस इज द मैजिक फॉर्मूला जो अजय भैया ने भी कल बोला था अपने ग्रिड में उन्होंने दिखाया था कि कैसे पी एक्सपेंशन से ही बड़ा पैसा बनता है और हमको यही काम करना उन स्टॉक्स में घुसना है जिसमें पी एक्सपेंशन के कारण मोमेंटम आ रहा है. अगेन अनदर साइंटिस्ट हु हैज इन्फ्लुएंस्ड मी in designing this strategy of relative strength is theory of relativity by Einstein, where Einstein साहब ने बहुत सीधी सी बात कर दी थी कि भैया हर चीज रिलेटिव होता है कोई भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता है. एवरीथिंग इज रिलेटिव. हमको अगर गर्मी लग रही है तो देर इज अ रिलेटिव मेजरमेंट दैट हमको गर्मी लग रही है बिकॉज टेम्परेचर इतना है. एवरीथिंग इज रिलेटिव. So there is no absolute frame of reference. Everything you measure an object velocity or its momentum and how it experiences time, it's always relation to something else. And classic is our school performance when we are always compared with our peer group. Relativity में time relative, expectation relativity and risk weighted relativity. Time relativity is technical analysis in a most crudest form. There is a swing action. Stage 1 is the initiation of swing. Stage 2 is the Vishnu phase, which is कितना resonate करता है ना जो कल अजय भाई ने बोला था. This is a Brahma stage, the Vishnu stage, and the stage 3 is the stage, Mahesh stage. But for us to exit right at the bottom, entry at the bottom and the exit at the top is impossible. Even if we enter at the late stage of stage 1 or the early stage 2, and even if we can exit towards the end of stage 3 or the early stage 4, I think we have done our work. Okay? Relativity को measure करेंगे तो the best measurement of relativity is a benchmark because that is the most tracked and most traded instrument. आज की रेट में निफ्टी इज द मोस्ट मैच्योर बेंचमार्क इन इंडिया. अगर मुझसे आप पूछेंगे नेक्स्ट कमिंग 5 years 10 years व्हाट विल हैपन इफ रेगुलेटर कंटिन्यूज टू हैव सम सेंस दे विल लाइक टू प्रमोट अदर इंडाइसेस आल्सो. फॉर एग्जांपल मिड कैप इंडेक्स शुड बी एज बिग एज निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स शुड बी एज बिग एज इंडेक्स बिकॉज ऑल दीज इंडाइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेंचमार्किंग ऑफ परफॉर्मेंसेस. राइट, जस्ट खाली एक इंडेक्स बन गया जिसको हम लोग देख रहे हैं दैट डजंट make that index efficient. The index should be tradable. It should be largely participable by everyone. तो अगर small cap index trade होने लगे, mid cap index में liquidity अच्छी आ गई, तब फिर मेरे लिए benchmarking हो जाएगा. एक mid cap stock का benchmark होगा mid cap index, large cap stock का benchmark होगा निफ्टी. बट अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ निफ्टी है जो कि सुपीरियर है, हम हमेशा निफ्टी को ही benchmark रख लेते हैं. Okay. So again, a momentum investor is always looking out for that race because it's all about money, honey. Simple है, 2 गाड़ियों की रेस है, कौन सी जीतेगी मेरे को उसी में पैसा लगाना है. इन दोनों गाड़ी में कौन सी जीतेगी डिफरेंस कैसे पता लगेगा? इन दोनों गाड़ी के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, अगर वो बरकरार है तो चांसेस हाई है कि ये जीत जाएगी. तो मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करना है और दूसरा पहली वाली गाड़ी का स्पीडोमीटर मेरे को हमेशा ट्रैक करना है कि भैया उसमें इतना
खुद के अंदर में स्पीड होनी चाहिए कि वो पीछे वाली गाड़ी का डिस्टेंस को बरकरार रख पाएगी। तो ये दो मेजरमेंट जो मैं यूज करता हूं, वन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड अदर इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम how the stock has outperformed or underperformed the Nifty, and RSI is a very nicely designed indicator for known to everyone. This is my, the formula of, my cheat sheet of what do I mean by swing trading, and that's where I want to spend some time here because I was discussing with Ashwin bhai yesterday, and he made a very valid point ki it's very difficult for all of us to be expert in all these. Okay, very very difficult, because अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर है तो आपका रूल बुक ही अलग है, अगर आप मिड टर्म स्विंग ट्रेडर आपका रूल बुक अलग है, अगर आप लॉन्ग स्विंग ट्रेडर है, मोमेंटम इन्वेस्टर है, तो रूल बुक अलग है। तो प्रेफरेबली जब आप एक कर रहे हैं आप वो ही कर रहे हैं, राइट, प्रेफरेबली। तो यू कैन प्रॉब्ली डिजाइन बेस्ड ऑन द how much time you have, how much risk capital you have. If you are doing 2 to 20 day swing, you are expected to give more time. Your risk reward will not be 4, 5, 3. It will be 2, 2.5. But your expectation of profit and loss will also be accordingly adjusted. If you have medium swing, 20 to 60 days, even if you are a weekend trader, it works. Because आपको तो alert लगाना है, और जब alert आएगा तो फिर आपको participate करना है। Or if you are a long swing trader or a momentum investor, which I am, I have already migrated myself from there to there to there. So there, obviously, your rule book or the parameters which you need to look at will be very, very different. So what's my approach? See, US market is US market, which is the mother market. और वहाँ से चीजें originate होती है। उस मार्केट से रिलेटेड जो बुक्स लिखी हुई है, जो कंटेंट है, जो सेशंस हो रहे हैं, उसमें एक उनके पास में एक पेक्युलैरिटी है कि वहां चीजें ओरिजिनेट होती है, राइट। इंडियन मार्केट में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम उस ओरिजिनेशन को देख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हमारे लिए एक्चुअली इजी है थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग को प्लान करना, बिकॉज हमारे पास एक रेफरेंस मार्केट है, राइट। दैट्स व्हाई द बुक्स टू बी रिटन फॉर इंडियन मार्केट व्हिच आई एम राइटिंग, होपफुली आई विल रिलीज माय बुक वेरी सून, दैट बुक विल हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ यूएस मार्केट स्टाइल ट्रेडिंग एक्सेट्रा, बट इंडियन मार्केट ऑल्सो हैज टू बी seen in a very different way. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.